So I've shared this presentation with you guys. Oh, okay, not this one, but ASAP methodologies. How many of you have gone through that? Manali, Shivani. I'm not saying so. Okay. So we were discussing that a traditional software methodology can have steps like requirement gathering and the development alongside with designing and some of the other things like deploying the applications alongside with go live and support. But in traditional SAP methodology, in traditional SAP, how it happens is like I generally have a system which is already ready. SAP is providing me a system which is a standard system which is already ready, but I have to customize that system to my client's need. देखो क्या होता है ना कि see whenever we are talking about any kind of a organization, particularly जो large scale implementations होते हैं, whenever I talk about any kind of a implementation जिसके अंदर 10,000 plus employees हैं, ठीक है, so those are the large scale implementation. So large scale implementations के अंदर हमेशा like let's say if I'm taking a company where I'm doing a large scale implementation, तो लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज हो सकता है कि मिसिंग हो जाए, ये हो जाए, एंड इट जनरली टेक्स लॉट ऑफ द टाइम बिकॉज रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं दैट आई हैव टू बिल्ड कपल ऑफ हॉलीडे कैलेंडर्स, 10-12 हॉलीडे कैलेंडर्स वी हैव टू क्रिएट एज पर द डिफरेंट डिफरेंट साइट्स. और अगर वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, दो तीन चार कंट्रीज के अंदर बेस्ड आउट है, तो देन इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स. So that's why even in the implementation projects it generally takes time. Okay, so for that we follow the ASAP methodology. ASAP methodology का first part ये होता है कि project preparation, second is business blueprint, third one is realization, fourth one is final preparation, fifth one is go live. So, project preparation. As a consultant, we do not involve in the project preparation phase only. From the management and from the implementation partner and the management from the client will involve in the project preparation phase. Okay, so what do you mean by the implementation partner? Implementation partner is those firms, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल TCS हो गया या डेलॉइट हो गया या EY हो गया या कैपजेमिनाई हो गया, yeah, any kind of an IT consulting firm. So what they say that okay, let's say there is a company, we were discussing an example of Ola Electric. Let's say Ola wants to go over there and implement a SAP into their SAP as an ERP process that they want to follow in their company. So they generally can reach out to the implementation partner that okay, we are looking forward to implement so and so type of a product in our company, please help us out. So वो सारा के सारा phase जो होता है from the implementation partners end, it is generally being taken care by delivery head, project manager and technical expert. Okay, now this can also be the SAP project manager or the regional project manager from the consulting company. It is also possible that company can hire additional external resources to implement those project on their premises, like, right? Okay, so let's say if I'm having Ola Electric, let's say Ola Electric themselves hire a team to build the to configure the SAP HCM product for them instead of looking out for a consulting firm. But a consulting firm have an idea कि क्या problems हो सकती हैं किसी भी system के अंदर. So that's why generally consulting firms or the implementation partner firms or the auditing firms are the one who generally takes care of the implementation part. Okay, because it is less consuming for them and they know the requirement, they have the right consultants to implement those systems. And then at the client end, generally the vice president or in some cases the CEO also and the project manager or CTO is also involved looking for the ERP implementation, about gathering the requirements and everything. So that is the ideal part of project preparation. Now this involves the activities like licensing the product. So they have to reach out to SAP and they have to get the product license. Now see, licensing works in a very very different way also, right? So in a licensing, let's say they say
in a licensing, let's say they say that okay, as of now we require 20,000 accesses in the system, 20,000 accesses in the system, and we have, let's say, around 18,000 employees in the system for which we want to have the access. Alongside with that, we want 2,000 extra accesses just to be for a future purpose. Like let's say if they are hiring a couple of more employees, so they cannot reach out for the licensing again and again. So let's say they, on a safer side, they want to acquire 20,000 licenses. Now licenses is nothing. When I've shown you the system, so see, licensing is nothing. It's this user ID that I'm using, and then again the password. So I'm having a credential of mine which is saved in this product, okay, in the server. So similarly, they require 20,000 accesses for all of their employees. Sir, are you sharing your screen? Am I not? Okay. Oh, I'm so No, sorry. you're not. One second. Can you see my screen? Yes, now it is visible. Okay. So we were discussing. I've shared this presentation with you. I've shared the half of the presentation. And I'll show you completely. So this is the ASAP methodology that we were discussing, which starts from project preparation, business blueprint, realization, final preparation, go live, and support. And then in the first phase, that is the project preparation, a consultant generally do not involve in the project preparation. Like at a consulting level, suppose if I'm a consultant or if you are a consultant who is implementing the project, working hands on towards implementing the project, generally you will not get involved over there, but an implementation partner, and then you will have the client. The client is the one जिसके लिए SAP system को implement करना है, and the implementation partner is the one who will be implementing the system. It could be auditing firms like Deloitte, EY, and it could be consulting firms like TCS, KPMG, and it can be any another company. Okay, so these are the activities that are generally performed in during the project preparation phase. That okay. See, SAP is not a free source, open source product. Like okay, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि Java मैंने मेरे system के अंदर install कर लिया and like I'm building an application and over there. So SAP is a tool which generally the client have to purchase. They have to purchase on certain licensing terms. कि कितने यूजर्स उनको रिक्वायर्ड होंगे, लाइक लेट्स से इफ आई एम एक्सेसिंग द SAP system. So this is for a particular user ID. I'm accessing this as a SAP system, right? My user ID is HCM user 1. So कितने कितने कितनी उनको user ID चाहिए रहेंगी, and how many employees at the same time would they also be requiring? How many employees at the same time they would also be requiring to map to the SAP system? Okay. So for that, they have to go over there and purchase that licensing from SAP. After licensing, generally they have to decide the landscape. Landscape means arrangement of server. Now see, try to understand. Here we are talking about a raw product versus the finished product. What I'm saying that okay, finished product is the one जो कि users use करेंगे for their business activities. Now business activities are like what? We have already discussed. Business activities are like what? Business activities could be hiring an employee. Business activities could be hiring an employee, terminating an employee, defining the shift plannings of employee, and running their payrolls, and it can be n number of things, right? So generally, all of those activities are carried out at the production server. See, production server is the live server which the client is using. Production server is the live server which the client is using for their business purpose activities. Okay, what is a development server? Development server is the one where I am configuring things. Okay, मैं कोई भी functionality या कोई भी चीज़ के अंदर मुझे change करना है, so first I will start doing it on a development server. Then I will move it on a quality server जहाँ पे या हो सकता है कि client के testers हो सकता है कि consulting firm के testers हो.
जो कि उस फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे दैट इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. Then those functionality will be moved to the production server so that the client can use the functionality. Okay, now see, one simple example could be, let's say a client tells me, example of development server and PRD server. See, let's say if the client is telling me that they want to hire, okay, so see, they already have 20,000 employees deployed on the production server, on the PRD server. Now they want to hire 500 employees more, 500 employees more who will be working in a night shift. Let's say this is one simple requirement that I'm giving you, who will be working in a night shift. Working in a night shift. Okay. See, in these 20,000 employees are actually working in the day shift. Now when I was implementing the system, तो फिर मैंने night shift के लिए तो कोई requirement बनाई नहीं थी उस time पे. This is the new requirement that the client is actually telling me कि उनको ये new requirement इस production server पे चाहिए. So all these activities, अब जब भी मैं इस तरह की चीज़ के ऊपर काम करूँगा, I will do it in the development server. I will move those changes into the quality server. एंड सारा टेस्टिंग होने के बाद में, डेवलपमेंट होने के बाद में, उसके बाद में टेस्टिंग होने के बाद में, आई विल मूव इट इनटू द PRD सर्वर. नाउ PRD सर्वर इज द लाइव सर्वर which the client is using. Live server which the client is using. See, I cannot do the configuration directly onto the PRD server क्योंकि अगर कुछ भी इशू हुआ देन द एम्प्लॉयज 20,000 एम्प्लॉयज जो हैं उनका पेरोल भी इम्पैक्ट हो सकता है. पेरोल कैन बी गुड इम्पैक्ट. अगर मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो प्रोडक्शन सर्वर के अंदर जहाँ से मैं सबको रन करके पेरोल दे रहा हूँ या जहाँ से मैं सारी के सारी HR एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, देयर कैन बी n number of problems in this server. So every single point of time we have to do the new configurations in the development server, then we'll take it to the quality server, and then we'll take it to the production server, which is the live server which the client is using for their end-to-end business processes. Okay, so I hope this example is a little understandable. We'll understand the landscape part of it more, but I wanted to show this example. Now similarly, अगर मान लो कि कुछ एक नए तरह की functionality client को एक बार टेस्ट करनी है, so generally in companies they also can, in the client can also have the sandbox server. Okay, so basically the simple example of this part would be, let's say uh, if let's say जैसे कि अपन Android applications या iOS applications के ऊपर upgrade देखते हैं, right? Or even whenever we get any kind of a, let's say we get an update for new version of Android, let's say Android 15 or Android 16, I'm not sure which one is going on, but let's say Android 15 or Android 16. So whenever they will be building Android 17 or whichever the next version will be, they will be first testing it on a development server, their local servers. Okay, right? And production server matlab kya ki when the end users can have the access for it. Who are the end users? We are the end users who are actually using that phone, right? So let's say it could be understandable in this way. Like I'm using a Samsung phone, and as of now, it's the One UI 5 or One UI 6. So whenever the One UI 7 development will happen, it will happen on the development server. They cannot do it directly onto the production server, right? Otherwise, there will be a lot of the bugs to be fixed around it. So similarly in SAP, it also works like that. Any new functionality will be first developed onto the development server, then it will moved onto the quality server, and then at last it will moved onto the production server.
in every part of it, it is generally known as the landscape, right? At any kind of organization, when you will be going, you first have to ask them that, okay, what is the landscape of your client? Landscape means it can also be it can also be possible that they can have couple of other servers as well, just for backup. कि कल को कोई सिस्टम पूरा ruin हो जाए, अगर कुछ सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो एक बैकअप सिस्टम रहे जहाँ से उसको बैकअप किया जा सके. So it works like that. Okay. So see, only consultants will have authorizations to the development server and sandbox server. Joe, the people who are actually configuring the system, they will only have the access to the development server and the sandbox server. Quality server will be used by consultants and core users. See, sometimes even the consultants don't have the access, but it depends from a client to client basis, organization to organization basis, कि उनको किस तरह का access देना है to whom. Okay, and see, who are the users? Users are the people who are actually utilizing the system for the end-to-end business process. I'll explain you the user part a bit, कि users कौन होते हैं and consultants कौन होते हैं. And then the production server will be used by the users. Only users जो खाली business processes को run करेंगे. They don't configure anything over there. Now, itself in the activity part, the next part will be the infrastructure. See how many new computers would be computers to be purchased to meet the number of licenses, जितने भी licenses वो चाहिए, कितने server environment चाहिए, where to keep servers. So let's say if your client is actually a multinational client, let's say if they are based out in 3 or 4 countries, then they have to have they have to have, let's say, hundreds of servers here, hundreds of servers, and let's say if they are present in USA, then hundreds of servers over there, and then let's say the hundreds of servers in Brazil, जो कि सारे के सारे आपस में connected रहेंगे. So infrastructure requirement is generally like that. Okay, to determine कि servers में कहाँ रखूँगा. Then a part which is the VPN connectivity. To keep the network and the connections secured at a different location ताकि downtime कभी भी नहीं हो. See, every single point of time, let's say if you are looking for a application like a Hotstar type of an application, when you're accessing that application, at the same time you can see the matches as well, and you can see the international content as well, right? So वो सारा के सारा content कहाँ से आ रहा है? There are some data centers जहाँ पे server आपस में connected है, वहीं से आपको वो content आ रहा है. So कल को आप वो application US जाके भी खोलोगे तो it will work the same way. Okay, it will not be much different. Only if you change the region, तो वो आपको एक content अलग देना चालू कर देगा. Then the consultant facility. During the project preparation phase only, it is determined by them that okay, कितने consultants चाहिए रहेंगे. Implementation partner list. कभी कभी ये भी होता है कि generally not एक single consulting company manage नहीं करती है. अगर project बहुत बड़ा होता है, so sometimes you can have the multiple consulting companies who are getting involved into the project, just to, कभी कभी होता है कि डेडलाइन जल्दी मीट करनी होती है, तो दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट अमंग टू मेनी कंपनीज इंस्टीड ऑफ वन सिंगल कंपनी. And at the same time, core users has to explain the client business processes to the consultant, and consultants will configure it into the SAP. See, core business processes क्या हो गई? देखो, हमेशा ऐसा नहीं. core business processes could be core business processes again could be the client say that we have hundreds of plants. Now see, let's say the plant A के अंदर 100 लोग काम करते हैं. Let's say plant A के अंदर 1000 लोग काम करते हैं, and in 1000 employees are actually working in 3 shifts. 1000 employees are working generally in a 3 shift. Shift 1, let's say they are working from 8 to 16. Oops. 8 a.m. to 4 p.m.
100 employees. The next 100 employees who are working in the plant A are working in a different shift, which let's say it is from 10 a.m. to 6 p.m. The next 100 employees are working in shift 3. Let's say they are working from, let's say they are working from 2 p.m. to, let's say, 8 p.m. Okay, see, it could be anything. Like I don't know the requirement, but generally use client की क्या requirement है, I'm not sure. Similarly, there it can go a bit long. So this is only for the plant A, I'm saying. Let's say in plant B, they only have these two shifts. They don't have the third shift. Let's say in plant C, they only have this single shift. Let's say in plant C, they only have generally the single shift. Okay, and now अब देखो इसके अंदर it is not the only requirement, right? Like simply they can have similarly the hundreds of plants. Now they are saying here these type of 100 employees जो कि 10 a.m. से 6 p.m. तक के काम कर रहे हैं, these are the salaried employees. These are the salaried employees. Now these are the hourly employees. These are the trainee employees. Here they are saying that these are the interns. And then these are the, इस केस के अंदर इस वाले प्लांट में टाइमिंग देखो वही है, but now they are saying that these are the hourly employees. ठीक है. So see, the requirements keeps on changing. तो जनरली सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो क्लाइंट के अगर लेट्स से 100 प्लान्स हैं तो उनकी ये सारी चीज़ें क्या हैं. लेट्स से वो इज़ द सैलराइड, वो इज़ द आवरली, पेमेंट टर्म्स उनकी क्या होंगी, व्हाट आर द जियो लोकेशंस, कैलेंडर कौन सा फॉलो करते हैं. द रिक्वायरमेंट कैन बी एन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट और द बिजनेस प्रोसेसेस दैट दे आर फॉलोइंग. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज बिजनेस प्रोसेसेस. So it means जो core users होते हैं, they will explain you what are the business processes to the consultants, and then consultants will create all of those things in SAP. मतलब क्या कि अगर मेरे को जो भी इस तरह की रिक्वायरमेंट कोई मेंशन कर रहा है, I have to make sure that I create the similar type of pattern in SAP ताकि इन 100 employees को जब hire किया जा सके, so it will reflect me as a trainee employee. ये 100 employees मुझे salaried employee दिखाना चाहिए और उनका shift timing भी यही होना चाहिए. ये 100 एम्प्लॉइज मुझे आवरली एम्प्लॉय दिखाना चाहिए और उनका शिफ्ट टाइमिंग ये होना चाहिए. सो मच लाइक दैट. Okay, so this part you can go go to it, and this is all about the project preparation. The next phase is the business blueprint. After the project preparation phase, implementation partner managers will conduct kick-off meeting. अभी देखो किक ऑफ मीटिंग के अंदर क्या होता है, दे विल गिव इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लाइंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द क्लाइंट. ठीक है कि कुछ कुछ ऐसा होता है कि सेंसिटिव डेटा होता है, नॉट एवरी कंपनी दे डोंट वांट टू गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, but all of those rules and regulations, and then the roles and responsibilities of client and the go live date. Go live date is nothing but जब मैं सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना चालू कर रहा हूँ, फ्रॉम दैट डे टू अ डे जब मैं सिस्टम को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए रेडी करूँगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए रेडी करूँगा जब से क्लाइंट उसको यूज़ करना चालू करे. ओके, so much like you can understand, like the go live date is something like, let's say agar let's say if Samsung is let's say there is new product which is launched, right? Apple Vision Pro. Okay, so they have shown the demo of that product earlier, but वो उसको 2 साल से develop कर रहे थे, but now they have released it for the consumers to buy it and to experience it. So go live date is much like that. जब मैं पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट को दूंगा so that the client can use it.
unke users can use it. So after the kickoff meeting, the consultants will go for the go at the client place. First, functional consultants will go. After that, technical team will go. I'll explain you कि technical team और functional consultants में क्या difference होता है. So on the first day, again you can go through it. Like generally, I've explained you the part about the requirement gathering. कि हर तरह की requirement gather करनी पड़ती है. You have to ask them generally what are the reporting tools that they are using. Reporting उनको किस तरीके से चाहिए, and you have to ask alongside with their standard business processes. अगर वो कोई ERP use कर रहे हैं तो वो अभी किस तरह का use कर रहे हैं, and what are their feasibilities from the system. Okay, so every day after completion of the requirement gathering, consultant will generally go back and explain the same to the associates and trainee consultants. See again, like they will always be senior consultants, mid-level ones, and the associate and the trainees. Okay, that's how generally get the work gets divided. Okay, and all the document जिसके अंदर सारी के सारी क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेसेस लिखी हुई है, दैट इज जनरली नोन एज द एज इज डॉक्यूमेंट. ओके, now, as is document is the one which is also known as the legacy document. Legacy document क्या हो गया? ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं कभी कभी कि as is process क्या होती है. So see, as is process is nothing but generally the process which client is, or generally you can also say the HR process, because here we are talking about the SAP HCM. So HR process which client is currently following, it may be through some ERP or manually. It is also known as लेगेसी प्रोसेस. मैन्युअली जो वो प्रोसेसेस अभी फॉलो कर रहे हैं, वो सारी के सारी प्रोसेसेस को मुझे सिस्टम पे लेके आना है. सो जब भी मैं उसको सिस्टम पे लेके आऊँगा, सो दोस प्रोसेसेस आर देन जनरली नोन एज द टू बी प्रोसेसेस. ठीक है, एज इस मीन्स व्हाट, एज इस मीन्स व्हाट, जो भी है द मैन्युअली दैट दे आर यूजिंग. टू बी मीन्स व्हाट, जो कि ये सारी के सारी प्रोसेसेस को मैं SAP पे लेके आ जाऊंगा. द लेगेसी प्रोसेसेस which are converted and configured on SAP HCM is known as to be process. So see, one example could be the, let's say, their organization structure. One example could be their organization structure. So as of now, उनका organization structure SAP पे नहीं बना हुआ है, right? So like let's say if they tell me that okay, first we have to get started by creating the organization structure. So similarly, like I have explained in the previous example, like I've explained you in the previous session, so I've built this company Ola Inc. over here. Okay, so like जैसे इसमें मैंने दो division बनाए थे, Ola Scooters and Ola Cab. So this was a manual requirement. ये उनकी functionality already बनी हुई है. This is what they are actually following. But here what I'm doing, I'm mapping the entire organization structure onto the SAP. तो ये क्या हो गया? ये 2B process हो गया. ओके, सिमिलरली एज इस प्रोसेस क्या था, जो कि मेरे को एक फंक्शनल डॉक्यूमेंट वहां से मिला था कि ओके, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाउ वी नीड टू मैप इट ऑनटू द एसएपी सिस्टम. ओके, सो टू बी डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ द बिजनेस processes of the client is to be or going to be look into the SAP. Okay, any doubt in this? No, sir. As is process में और to be process में, this is all the part of business blueprint only.
ओके, नाउ सी इम्पोर्टेंट पार्ट इज द गैप एनालिसिस. देखो, SAP ऐसे तो मुझे हर तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, बट सी देर आर अगेन सम ऑफ द थिंग्स जो कि मैं SAP पे नहीं कर सकता हूँ. आई हैव टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एक टिकटिंग मैनेजमेंट टूल हो गया. ओके, डू यू गाइज नो टिकटिंग मैनेजमेंट टूल्स लाइक सर्विस नाउ, जीरा एंड एनीथिंग लाइक दैट? टिकटिंग मैनेजमेंट टूल इज नथिंग बट जनरली अ टास्क मैनेजमेंट. अगर मैं कोई भी फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो दे क्लाइंट हैज़ टू हैव अ टिकटिंग मैनेजमेंट टूल जो कि सारी चीज़ों को ट्रैक कर सके कि अगर ये वाला टास्क ओपन किया था तो उसको कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो इट कुड बी वन एग्जाम्पल. अनादर एग्जाम्पल कुड बी द स्प्रेडशीट. ओके, स्प्रेडशीट में मेरा क्लाइंट चाह रहा है कि वो एक्सेल ही यूज़ करना चाह रहा है फॉर देयर डे टू डे स्प्रेडशीट, बिकॉज SAP के अंदर डायरेक्टली कोई स्प्रेडशीट एनालिसिस नहीं बना हुआ है. ओके, सो दीज आर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. सो दीज आर द गैप एनालिसिस दैट जो कि SAP के अंदर स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती चीज़ें. Any client requirement for which there is no solution in SAP or from SAP, then we will treat it as a gap, and it has to be dealt with some or the other alternative solution. उसके लिए कोई एक alternative solution लाके उसको integrate करना पड़ता है सिस्टम के अंदर. दिस इज अगेन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन. लाइक जनरली एक सैंडबॉक्स सर्वर क्या होता है, एक डेव सर्वर क्या होता है, एक क्वालिटी सर्वर क्या होता है, एक प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है. एंड दिस इज ऑल इट हैपेंस इन द रियलाइजेशन फेज. रियलाइजेशन मीन्स द कॉन्फ़िगरिंग द क्लाइंट बिजनेस प्रोसेस इनटू द SAP. तो यहाँ पे बिजनेस ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने सारा के सारा डॉक्यूमेंट क्लाइंट से ले लिया. आई हैव गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट कि ठीक है, ये सारी के सारी उनकी प्रोसेसेस है, and then these are the processes which I need to go over there and map into the SAP. So once collecting all of those, after collecting all of those requirements, I will go into the realization phase. इसके अंदर क्या करूँगा मैं, actual to be processes को configure करना चालू करूँगा. Okay, so generally this phase is for 2 month, जहाँ पे and it again depends कि configuration कितना बड़ा है, कितनी sites हैं उनके पास में, एंड कितने एम्प्लॉयज़ के लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना है. अगर सबकी पे स्केल्स अलग है, अगर सबका शिफ्ट प्लानिंग अलग है, लेट्स से दे हैव थाउजेंड्स ऑफ शिफ्ट प्लानिंग्स, तो वो 2 मंथ्स में नहीं होता है. जनरली द इम्प्लीमेंटेशन देन गोज लॉन्गर. बट उस केस में हम ये भी पूछ लेते हैं कि लाइक लेट्स से ऑन एन इनिशियल पेस वी कैन प्रोवाइड यू द 100 ऑफ शिफ्ट प्लानिंग्स, एंड देन उसके बाद में हम आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर we can complete all of the rest of the configuration so that you guys can at least get started with the system. Okay, so generally the development or see, sometimes research related activities also happens on a sandbox server, but most of the times it happens generally onto the development server. But again it depends कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कह रहा है कि किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, या फिर स्ट्रैटेजी क्या है पूरे के पूरे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की. it generally gets different from client to client basis. Generally the T codes can be of two part. I'll come to the T code part. It is generally, as of now, just get this thing that okay, there is something which is called as T code, and it is of two part. Transport जो उसके अंदर save होता है, one is the workbench request, another one is the customizing request. I'll come on to this part. Okay, in the realization phase, then there are the two types of configuration. One is the baseline configuration, which is specifically related to one module. Okay, and another one is the final configuration. Final configuration is the configuration for which you have to depend on to the other modules consultants as well. So see, try to understand this part. देखो, अगर मैं SAP HCM के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कर रहा हूँ जो वो मैं कर रहा हूँ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की, ठीक है. बट जब मैं पेरोल पे आऊँगा, या अगर लेट्स से मैं अगर टाइम मैनेजमेंट पे आऊँगा, तो all of these configurations I generally cannot do it on my own. Let's try to understand why.
देखो, see, payroll and the time management aspect of any organization is generally linked with the फाइनेंस टीम. कैसे? भाई मैं पेरोल जो दूंगा उसके लिए मुझे ऐसा थोड़ी ना है कि फाइनेंस टीम अलग से बजट पूरी तरीके से मतलब अ, सारा के सारा बजट दे देगी एंड उसके अंदर से काट के मैं पेरोल दे दूं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. जब भी मैं पेरोल परफॉर्म करूंगा, एक बैलेंस शीट, एक कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग मुझे मेंटेन करके फाइनेंस टीम को प्रोवाइड करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर ही. ओके. जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज द चार्ट ऑफ अकाउंट्स और द सिंबॉलिक अकाउंट्स. क्यों क्यों मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा? सो दैट द क्रेडिट इन एंड द डेबिट इन credit in and the debit in records can be maintained. Records can be maintained. Okay. जब देखो मैं सैलरी दूंगा एम्प्लॉयज को, यहाँ पे लेट्स से आई एम गिविंग द सैलरी टू 20,000 एम्प्लॉयज. ठीक है. नाउ देयर विल बी द रिडक्शंस लाइक एचआरए, देयर विल बी द डिडक्शंस टू लाइक देयर पीएफ, gratuities. There'll be deductions based on to the insurances. Okay, so all of those details I have to be keep it posted to the finance team for the credit in and debit out. कितना पैसा गया, कितना पैसा आया. Okay. मतलब जनरली डेबिट इन इट अगेन मतलब डिपेंड करता है कि डिडक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एंड बेस्ड ऑन टू दोस पार्ट. सो इसके लिए मुझे एसएपी फीको टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा. एसएपी एचसीएम टीम को एसएपी फीको टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा और जनरली एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर. एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर सो दैट जब भी यहाँ से सैलरी डिडक्ट हो रही हो ऑन अ मंथ बेसिस, all of those details will generally get stored or generally get posted to the finance team उनके balance of account और chart of accounts के अंदर. So baseline configuration, remember this thing, baseline configuration is all about configuring the individual parts. Okay, and then the final configuration, at the time of final configuration, वैसे जब मैं SAP HCM payroll भी configure करूंगा या time management भी configure करूंगा, so after the configuration, as a part of the final configuration, I have to do checks and balances at SAP FICO side as well, finance and controlling side as well. और generally I have to be in a contact with them कि integration सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. लेट्स से अगर मैं डेमो सिस्टम के ऊपर एम्प्लॉइज की सैलरीज को कट कर रहा हूं तो आर दोज रिकॉर्ड्स आर शोइंग ऑन योर सिस्टम्स और नॉट, जिस तरीके से होना चाहिए, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है. सो दैट इज जनरली द पार्ट ऑफ द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन. Okay, so it could not necessarily be the finance module also. It could also be, let's say, even in this cases अगर मैं SAP, अगर प्लांट साइड पे कोई एस ए पी 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 यूज कर रहा है, लाइक एट अ प्लांट साइड, अगर इफ समवन इज यूजिंग एस ए पी प्रोडक्शन प्लानिंग और एस ए पी एम एम, देन जनरली जितने भी मैं एम्प्लॉयज को क्रिएट करूंगा आई हैव टू कीप इट इन टू द कंसिडरेशंस दैट ओके प्लांट साइड पे एस ए पी 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 के अंदर ये यूज हो रहा है, एस ए पी एम एम के अंदर ये यूज हो रहा है. सो जितना भी वो वाला पार्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन का, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, नॉट द बेस लाइन वंस. So first we configure. So first we complete the baseline configuration. Then we generally go for the final configurations. So in a quality server, at the same time we also do the unit testing, integration testing, smoke testing, and a regression testing. अब देखो यूनिट टेस्टिंग इज समथिंग कि कोई अगर मैं फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहा हूँ तो दैट फंक्शनैलिटी आई विल बी टेस्टिंग इट इनटू माय सिस्टम ओनली फर्स्ट. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या हो गया? इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द वन दैट इट इज द टेस्टिंग for which you have to depend on to the other module consultant. जैसे कि SAP FICO वाला पार्ट हो गया which is the final configuration part. तो उसी की ही टेस्टिंग करना कि इंटीग्रेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अगर मैं यहाँ से सैलरी डिडक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ से वहाँ पे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एंड देन द थर्ड पार्ट वुड बी द रिग्रेशन टेस्टिंग. सी
मैं कोई भी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ना, लेट्स से अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि मेरे को 500 एम्प्लॉयज़ के लिए एक शिफ्ट प्लानिंग क्रिएट करनी है। मेरे को यहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ के लिए एक शिफ्ट प्लानिंग क्रिएट करनी है, दैट इज़ नाइट शिफ्ट। अगर मैंने ये जैसे ही कॉन्फ़िगर कर लिया, डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर मैंने इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर लिया, आई हैव टू डू अ नेगेटिव टेस्टिंग कि इस नए कॉन्फ़िगरेशन के कारण मेरे पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, दिस वी हैव टू डू इट इन द सिस्टम दैट कि ये जो नया कॉन्फ़िगरेशन है इसके कारण पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज द होल सिस्टम विल बी ruined. So for that we have to perform the smoke testing and the regression testing कि हाँ ये तो मैंने कर लिया, बट एक दो एम्प्लॉयज़ में यहाँ के भी लेके चेक कर लेता हूँ कि डे शिफ्ट प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इसके कारण कुछ इम्पैक्ट आया है वहाँ पे. So that is generally the part of smoke testing and regression testing. See, now, and then at the same time you have to create the test documents. What to test, how to test, expected results, actual results, testing document number, and then the status. Status मतलब ठीक है अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, या फिर यूनिट टेस्टिंग में है, या वेटिंग रिक्वायरमेंट है, या क्वालिटी के लिए सेंड कर दिया है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So once testing activity is completed in quality server, then we prepare a user manual. जितनी भी मैं baseline configurations कर रहा हूँ, let's say I have created this organization unit, then I have to take the print shot of it, and then I have to save it, ताकि let's say, because see why I have to save it. देखो, SAP sometimes becomes so complex कि कोई भी बीच में से इंटरप्रेट नहीं कर सकता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन उस टाइम पे किया गया था. सो लेट्स से इन फ्यूचर मैंने एक बार सिस्टम इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया. लेट्स से इन फ्यूचर क्लाइंट को 5 साल बाद में इस चीज़ के अंदर कुछ चेंज करने हैं. सो डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी देयर इन प्लेस, दैट इज जस्ट द that is just also known as the right practice, that a dedicated document has to be there in place ताकि client ये देख सके कि ठीक है 5 साल पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, एंड वेयर एक्चुअली वी हैव टू गो ओवर देयर एंड डू द चेंजेस टू, ताकि पहले वाले कॉन्फ़िगरेशंस इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो. Okay, so every single point of time, every configuration that I'm doing in the system, the good practice is that I keep the record of it कि यहाँ पे जाके मैंने ये सारी के सारी चीज़ें की थी, and that is generally known as the realization document. Okay, now this document can also be given for the KT purpose. कल को अगर कोई नया कंसल्टेंट मेरी टीम के अंदर ज्वाइन कर रहा है, तो इंस्टीड ऑफ टेलिंग हिम एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई कैन हैंड ओवर हिम दिस डॉक्यूमेंट, एंड ही देन कैन गो फॉर इट, एंड अगर उसको कुछ डाउट आता है तो देन ही कैन रीच आउट टू मी, और ही कैन रीच आउट टू द प्रोजेक्ट टीम दैट ओके व्हाट वाज डन ओवर हियर, ताकि ही कैन गेट ऑन टू द थिंग्स वेरी वेरी क्विकली. So in the realization phase, there are generally the 4 documents: functional specification documents, test cases document, and then the user manual documents, and then the configuration document. Functional specifications is something that we are taking from the client end. जो हमने सारी के सारी चीज़ें क्लाइंट से ली थी, that okay, these are the business processes जिसके हमको उसको SAP पे मैप करना है. कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट इज द वन विच वी आर एक्चुअली कॉन्फ़िगरिंग कि ठीक है अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर जाके ये सारे के सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है, या टाइम मैनेजमेंट के अंदर जाके ये सारे के सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट. टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट मतलब जितनी भी फंक्शनैलिटीज मैंने क्रिएट की हैं, all of the functionalities which I have created, I have tested those functionalities, and जो भी उसका result होगा, for that I have to create a document, and a user manual document is the one कि जिसमें मैं बताऊंगा कि यूज़र को उस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है. लेट्स से अगर यूज़र को किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो वो कैसे करे. लेट्स से अगर यूज़र को किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है तो वो कैसे करे. स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ एवरीथिंग. देन द फाइनल प्रिपरेशन, यूज़र ट्रेनिंग is generally the part of it. So I've created a document, I handed over the document to the team, and after that, the user training sessions will begin. And generally, we train the users that okay, this is how you have to go over there and use the system. That ठीक है इस तरीके से employees का payroll run करना है, इस तरीके से employees को shift assign करना है.
अगर किसी एम्प्लॉय का कोई लोन चल रहा है तो उसके लिए उसको ऐसे करना है, अगर किसी एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज करना है या लेट्स से अगर उसका लोकेशन चेंज करना है तो उसको अगर उसका कुछ भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या एनी काइंड ऑफ अ डिटेल दैट यू वांट टू चेंज फॉर एनी एम्प्लॉय, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे. All of those things are generally the part of user trainings in a real-time environment. Then the UAT sign-off. UAT sign-off is nothing but a tester जो भी मेरी functionality को test कर रहा है, एक बार वो test करके confirm कर देता है कि okay, these things are working fine, then that is known as the UAT sign-off. So after the UAT sign-off, generally basis consultant को अपन को reach out करना पड़ता है. Why do we have to reach out to basis consultant? सो दैट अगर मैंने कोई भी चेंजेस डेवलपमेंट सिस्टम में किए हैं जो क्वालिटी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मैंने उसको इंसर्ट कर दिया है कि ओके, सो दैट द टेस्टर कैन टेस्ट इट, आई हैव टू रीच आउट टू द बेसिस टीम दैट ओके, ये मेरे चेंजेस हैं, दीज आर द न्यू चेंजेस एंड दीज न्यू चेंजेस हैज टू बी शिफ्टेड टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर द लाइव यूज, ताकि बिजनेस यूजर्स उसको यूज कर सकें. So generally the basis team is the one who takes care of this part. All the new functionalities which I have developed into the development system, which has been tested into the quality system, has to be moved to the production system so that the business users can use it, and this is been achieved by basis team. Basis consultants. Basis team. So I'll explain you what the basis team is all about. Where we were. Similarly, the cutover activities. Cutover activities is the uploading of the master data and open transaction data from legacy system to SAP. देखो, अगर 20,000 एम्प्लॉयज अगर सिस्टम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 20,000 सिस्टम्स अगर एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड द क्लाइंट इज हैविंग, सारे के सारे 20,000 एम्प्लॉयज का अगर क्लाइंट के पास में एक एक्सेल हो गया या कोई भी एक अलग फॉर्मेट हो गया, उनके पास अगर रिकॉर्ड है उस चीज़ का, so this Excel can directly be uploaded into SAP system. Okay, सारे के सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली SAP सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ a step which is known as the LSMW or the data migration steps. Okay, so cutover activities means uploading of master data. Master data is nothing but employee related records. Employee related records can be employee ID, it can be employee shift planning, it can be employee's address, it can be employee's salary, it can be the additional benefits that the employee is getting, all of those data from the legacy system. अब देखो, लेगेसी सिस्टम मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो कोई ना कोई एक सिस्टम यूज कर रहे हो फॉर ऑल ऑफ द एम्प्लॉय मैनेजमेंट. ठीक है, सो इधर दैट सिस्टम अगर वो नहीं कर रहे हैं तो दे हैव टू गो ओवर देयर एंड क्रिएट इट मैन्युअली इन द एसएपी. So these are the techniques generally to upload the data into SAP. One is the LSMW, another one is the BDC, another one is the BAPI. Legacy system migration workbench is generally a technique कि ठीक है, मेरे पास कोई already एक system है जहाँ पे सारे के सारे employee records है, and generally now I have to go over there and I have to sync all of the employee related record to the newly configured SAP system. It's much similar to like let's say you're changing your phone, आपने सारा के सारा contact details आपका drive पे save कर दिया, and then in the new phone if you are utilizing the same email ID or the same drive account, सारे के सारे contacts sync up हो जाते हैं and सारा के सारा Google Drive related data sync up हो जाता है, right? So it much like the same. So LSMW is the process जिसके थ्रू मैं किसी और सिस्टम से कनेक्ट करके सारा के सारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वहाँ से फैचअप करके ला सकता हूँ. सो दिस इज फॉर दिस यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट द स्ट्रेटेजी कि ठीक है किस तरीके से हमको वो चीज़ करना है, एंड देन देर इज अ पीरियड फॉर इट कि कितना टाइम लगेगा, सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट विद टाइम क्लाइंट अकॉर्डिंगली. आफ्टर दैट एट लास्ट the thing is the go live and support. Here
जो भी मैंने सिस्टम कॉन्फ़िगर किया है SAP के ऊपर, आई एम हैंडिंग ओवर दैट सिस्टम टू द क्लाइंट दैट दे कैन यूज दैट सिस्टम। जो भी उनकी बिजनेस प्रोसेसेस हैं HR रिलेटेड, उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द सपोर्ट मीन्स दैट अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, then I'm going over there and I'm providing the post production support. Let's say अगर employees, let's say अगर सिस्टम कहीं अटक गया, सैलरीज कॉन्फ़िगर नहीं हुई ठीक तरीके से, या अगर कुछ सैलरी पोर्शन मिसिंग है पे स्टब्स के ऊपर, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स इज द पार्ट ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द while configuring the system. Okay, so this presentation I will give you. uh, I hope you guys can go through this presentation and can come up to me with some kind of a doubts. Manali, Shivani, any doubts in any of the slides as No, of sir. now? No, sir. Okay. देखो थोड़ा थ्योरी है, आई अंडरस्टैंड, बट अगेन लाइक आई डोंट वांट यू गाइस की सिस्टम पे जब अपन चालू करें तो यू go blank generally कि that okay what is UAT and what is this part, but okay, slowly and gradually ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट वैसे ही समझ में आ जाएगा once you read it twice or thrice. Okay. Okay, so till Okay, the sir. next class will be on Monday. I want you guys to go through this document and come up to me with some doubts कि कहीं कुछ इसके अंदर दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ. Any kind of a doubt is fine. Do your own research as well कि gap analysis क्या होता है, sandbox system क्या होता है, development system क्या होता है. This is just a cycle. Okay, generally सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे भी यही साइकिल इस तरह की ऑपरेट होती है. बट हियर हम क्या कर रहे हैं कि हमको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल गया है, SAP एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मुझे दे रहा है, उसके लिए उसको मैं अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. आई विल पुट दिस रिकॉर्डिंग एंड मैं ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा ऑन व्हाट्सएप ओनली, so that you guys can go through it. Thank you. Thank you. Thank you, sir.